Okay, beta. So the first chapter of inorganic is periodicity. Okay, the word periodicity का एक different मतलब है. Periodicity का मतलब है, देखिए, there are two ways to study the properties of element in a periodic table. ठीक है? The one way is to study the properties down the group. ठीक है? We talk about the properties of group 2, group 3, group 4, group out, down the group. The problem with the down the group is that the down the group, the chemical properties remains exactly same because all are metals. The physical properties changes क्योंकि उसमें number of shell add हो जाते हैं, electron add हो जाते हैं, mass change हो जाते हैं, इसकी वजह से intermolecular forces change हो जाती हैं. Periodicity is basically the study of physical and the chemical properties of element across the period from left to right. Across the period, physical and chemical properties की studies को हम क्या कहते हैं? क्या होगा issue? कुछ मसला हो गया? ओके, हम कहते हैं periodicity. तो सबसे पहले periodicity की definition लिखेंगे. It is the study of physical and chemical properties of elements across the period. ठीक है? Across the period means we normally talk about the properties from left to right within a period. ठीक है? अब मुझे बताइए, if we study the properties from left to right, क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? Down the group, either all elements are metals or either all elements are non-metals. ठीक है ना? हाँ, सिर्फ एक group 4 is a group in which you have some metals and some non-metal and metallite. Besides, in all other group, सारे या तो metal हैं, सारे non-metal हैं. If you move across the period, the first element belong to group 1. लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, तो पहला एलिमेंट ग्रुप 1 का होगा मेटल, दूसरा ग्रुप 1 का 2 का होगा मेटल, द थर्ड वन इज ग्रुप 3 मेटल एंड देन द फोर्थ वन इज नॉन मेटल. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटल भी मिलेंगे, मेटलाइट भी मिलेंगे आपको, ठीक है, नॉन मेटल भी मिलेंगे एंड इवन द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट. ठीक है, सो इट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स एंड नोबल गैसेस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द स्टडी periodicity, which is a study from left to right across the period, is more important than studying down the group. Okay, clear? So this is a general introduction of the entire periodic table. Now, if we talk about the period 1 of the periodic table, तो across the period की बात कर रहे हैं, तो अगर हम period 1 की बात कर रहे हैं, तो period 1 only consists of two elements, hydrogen and helium. If we talk about the period 2 of the periodic table, ठीक है, जो स्टार्ट होगा, आई थिंक यहाँ पर ग्रुप 1 में आपके पास लिथियम होगा, देन बेरिलियम होगा एंड सो ऑन. यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड देन नोबल गैस. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. देन यू हैव सोडियम, देन यू हैव मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन या सिलिकॉन आ जाएगा. ठीक है, एंड देन मूव फॉरवर्ड फ्लोरीन. क्लियर? अब देखें, we cannot study period 1 because it only consists of two element. कोई फायदा ही नहीं period 1 को पढ़ने का. ठीक है, period 2 consists of all the elements that are the first member of the group. जितने भी element period 2 में हैं, they are the first member of the group. If I show you the periodic table, where is my periodic table? Okay. हो गया periodic table मेरा. नजर आए तो बताइएगा कहीं periodic table. मेरी सेल्फियां आ गई, periodic table नहीं आया.
Okay. Now you can see the period one, period two, starting from lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine. All the elements belong to the period two are the first member of the group, और period three वाले second period को part. अब यहाँ एक key point है. The properties, chemical properties especially, of the first member of the group is different from the rest of the member of the group. Why? Because they do not have empty orbital present. एक example देता हूँ. You remember हमने पढ़ा था कि nitrogen and phosphorus belong to the same group of the periodic table. Nitrogen bonding में पढ़ा था. Nitrogen can only make 3 covalent bond with 1 lone pair of electron. ठीक है? But phosphorus can also make 5 covalent bond like PCl5. In a similar way, oxygen and sulfur belong to the same group. Oxygen can only make 2 covalent bond with 2 lone pair, but sulfur can make SF2 like oxygen, SF4 or SF6b. तो हम कहते थे कि sulfur में you have more than one excited state possible because it has empty orbital present, which is not possible in oxygen, which is not possible in nitrogen. तो देखो properties different हो गई ना. Oxygen जैसे compound बना रहे, sulfur वैसे compound नहीं. Sulfur जैसे compound बना रहे, oxygen वैसे compound नहीं बना रहा. ठीक है, clear? So can I say that key point, period two elements consist of first members of every group. The properties of first member of the group is different from the other members due to, I remember, as they do not have empty orbitals. Again, that's why we do not study even period two in a periodicity. ठीक है, इसी बात के रिमाइंडर के लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि yes, H2O oxygen being the first member can only make 2 covalent bond with 2 lone pair, but sulfur can make SF2 exactly like oxygen, SF4 and SF6. ये रिमाइंडर है कि हम ये पढ़कर आ चुके हैं इन बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है ना. सो हम पीरियड टू एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करेंगे. हम स्टडी करेंगे कौन से एलिमेंट्स को? स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थ्री. Okay, better. Just give me 1 minute. Okay. So if you study like aluminium, gallium, indium, ये सारे कवर अप हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई, आगे चलते हैं. So the element belong to period 3. List down those element horizontal way: sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. So we are going to study the properties of element like sodium, magnesium, aluminum, phosphorus, sulfur,
chlorine, and argon. These are the elements belong to period 3. Proton number 11, 12, 13, 14, 16, 17, and then 18. Out of metals, silicon is a metalloid. Metalloid is the properties between metal and non-metal. Phosphorus, sulfur, and chlorine are typical non-metals. And argon is noble gas. All types of elements: metal, metalloid, non-metals, and noble gas. Okay. Now let's start with the physical properties of these period 3 element. Properties of period 3 elements. Okay, the first property is called atomic. The first property is basically the atomic radius. Okay, now technically or experimentally, what is the way of finding out the radius of an atom? Let's suppose you have a atom with a nucleus, ठीक है, और इसका atomic radius है. हाँ, ठीक है, सही है, ये एक atom है. Clear? The center part is basically the nucleus and this is the outermost electron. So atomic radius is basically the distance from the nucleus to the outermost electron. है ना? ये कहलाएगा atomic radius. Now there is an issue with it. Issue ये है कि the position it is very difficult to locate the exact position of an outermost electron, as electrons are very tiny particle, charged particle moving with a very great speed. So it is very difficult कि हम उसे locate कर सके. ठीक है ना? The only solid particle in any atom is basically the center part, which is the nucleus. We can locate the nucleus because that's the only solid particle in any atom. ऐसे ही ना, तो हम उसे आराम से locate कर सकते हैं. इसीलिए to measure the atomic radius, हम क्या करते हैं? We measure the distance between the nuclei of two neighboring atoms. Let's suppose we have one atom here. सही है, ये इसका न्यूक्लियस और इसका एटॉमिक रेडियस है. वी हैव वन एटम हियर, ये इसका न्यूक्लियस और इसका एटॉमिक रेडियस है. हम इनके न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस मेजर करेंगे एंड बी डिवाइडेड बाय, ठीक है. टू गेट द एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस, these two atoms must be very closely packed together, है ना? If they are loosely bonded to each other, if there's a gap in between these two atoms, so the atomic radius won't be accurate. ठीक है ना? अब इसमें थोड़ी सी चीजें आएंगी. सबसे पहले हम लिखते हैं एटॉमिक रेडियस. इट इज द डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस of the distance between the nuclei of two neighboring atoms. ठीक है जी, that's how we can measure to get the accurate. Key point क्या है? To get the accurate atomic radius, atoms must be closely packed together. ठीक है बेटा, है ना? दोनों को बहुत क्लोजली पैक्ट होना चाहिए ना, अदरवाइज तो गैप आ जाएगा. To keep this thing in mind, there are different types of atomic radius. ठीक है, there are different types of atomic radius.
द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। पहले को हम क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस। क्या लग रहा है बेटा नाम से? मेटालिक रेडियाई किन में होगा? मेटल्स में। अच्छा, मेटल्स में बताइए दो एटम्स कैसे अटैच हुए हुए होते हैं आपस में? हाउ टू एटम्स? हाँ, बाय मेटल्स में। You know the structure, a positively charged metal line surrounded by a sea of delocalized electron. Between the atoms, the force of attraction is a metallic bonding. Okay? So can I say that metals, atoms are very closely packed together. In metals, atoms are very closely packed together by a strong metallic bonding. Okay? That's why the metallic radii is very accurate. So ये वाला हमारा metallic radius metals में होता है और हम लिखेंगे यहाँ पे in metals atoms are very closely packed together. सर बस चला closely packed together by strong metallic bonding. ठीक है, और हम लिखेंगे नहीं सर, मैं तो अभी बहुत मुश्किलों से वाईफाई अपना कनेक्ट वो कर दिया 4G। आपके वाले सब में इन बच्चों के पास नहीं है। यही यही सवाल है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग वो डिपेंड्स अगर वो हाँ देयर इज नो गैप बिटवीन एटम्स। ठीक है, क्लियर? सो मेटालिक रेडियाई को हम डिफाइन कैसे करेंगे जनाब? इट इज द हाफ ऑफ it is the half of distance between the nuclei of two atoms bonded by metallic bonding. Okay, by metallic bonding. One key point and the last thing, metallic radii is very accurate. ठीक है, बात समझ आ गई? मेटल्स में एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग्स, उनका रेडियस जो है वो बहुत एक्यूरेट आता है आपके पास। व्हेन यू टेक द डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, बहुत एक्यूरेट आएगा। दैट्स कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। एंड द सेकंड वन इज बेसिकली कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। Okay, the half of the distance between two atoms covalently bonded to each other. ठीक है, कोवेलेंट रेडियस किस में होगा जनाब? द कोवेलेंट रेडियस इज बेसिकली इन नॉन मेटल्स, यानी ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 एलिमेंट, नॉन मेटल्स। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस between two atoms bonded
together by covalent bond. ठीक है, half of the distance between two atoms bonded together by covalent bond. Clear? आसान है. अच्छा, इसका भी की पॉइंट लिखें. Very accurate, but not as accurate as metallic radii. Why? Reason? सोचो. Because metallic bonding is stronger than covalent bonding. Because metallic bond is stronger than covalent bond. ठीक है बेटा, मेटल कवर हो गए, नॉन मेटल कवर हो गए, कौन बचे? मेटोलाइट तो मेटल्स में ही आते हैं. मेटोलाइट्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है. ठीक है, मेटल्स मेटोलाइट दे हैव द मेटालिक बॉन्डिंग, नॉन मेटल हैव अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, बोथ आर कवर, द रिमेनिंग आर नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के बारे में क्या ख्याल है? नोबल गैसेस, atoms are held together by a weak dispersion or van der Waals forces. Okay, there's very less force of attraction between the atoms and there's a large gap in between the atoms. है ना? तो जो रेडियस आएगा, that's called the van der Waals radii. And due to this weak force of attraction, which is an intermolecular, intramolecular भी नहीं है, it is the intermolecular force of attraction, the van der Waals radii is very, very less accurate. ठीक है, so the third one and the last one in terms of radius definition is called the van der Waals radii. ठीक है जी, van der Waals radii is in noble gases. ठीक है, is in noble gases. अच्छा, it is the half of distance between the nuclei of two atoms held together by weak van der Waals forces. ठीक है, clear? Weak van der Waals forces. As you can see, there is a large gap in between them. So van der Waals radius is very less accurate. ठीक है बेटा, सबसे लेस एक्यूरेट कौन सा है? van der Waals radii. Clear? There is a possibility that they ask question about this stuff, how we can measure the atomic radius. So how we can measure the atomic radius? We take the distance between the nucleus of two neighboring atom and divide it by half कर देंगे. ठीक है? Types of atomic radius, आसान सी बात है, मेटल्स में मेटालिक रेडियस होगा, वेरी एक्यूरेट. नॉन मेटल्स में कोवेलेंट रेडियस होगा, मेटालिक रेडियस से कम लेकिन वेरी एक्यूरेट एज वेल. ठीक है, और वैन डर वाल्स रेडियस आपके पास सबसे लीस्ट एक्यूरेट. क्लियर? बात करते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड. बताएं जनाब, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ भाई, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, क्या स्टेटमेंट दे रहे थे? टेस्ट लेना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. एंड वी गिव द रीजन. रीजन क्या देते थे? Across the period, as the electron is present in the same outermost shell, the nuclear distance and the shielding effect remains nearly constant, but the nuclear charge increases, due to which the ionization energy value increases. ये वही zigzag वाला ग्राफ था, एंड में आएगा. अच्छा, न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या है? एटॉमिक रेडियस. और हमने टर्म क्या यूज करी? एटॉमिक रेडियस रिमेन्स नियरली कांस्टेंट. So we say that the atomic radius remains nearly constant
इफ यू आर टॉकिंग इट इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन करना है तो एटॉमिक रेडियस को बोलेंगे नियरली कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को पढ़ना है तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड पढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the period, the atomic radius decreases as electron is present in the same shell, nuclear charge increases but shielding remains same. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियस across the period from left to right, so हम यहां ले लेते हैं जनाब, this is atomic radius and on the y-axis you can take the proton number. ठीक है, सो भाई सबसे पहले होगा you have प्रोटॉन नंबर 11 सोडियम। ठीक है, सोडियम होगा, सोडियम से कम आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम आपके पास, एंड देन सो ऑन, मूव करते 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 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। So let's say proton number 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and then 18. Okay. So this one is sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Where is argon? Where is argon? So I draw argon somewhere randomly here. यहाँ कहीं argon को mark कर दूंगा मैं। ठीक है, why? Because it is very less accurate. It is very less accurate. तो वो गैप्स की वजह से नोबेल गैसेस का जो रेडियस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। It is possible that in exam they give you the radius of chlorine and they give you the numerical value for the radius of argon, and they ask you why argon have radius much more greater than chlorine. तो आप बोलेंगे because it is a van der Waals radii which is very less accurate. याद रहेगी ये बात? ठीक है, so हम यहाँ पर इसको दोबारा से we're going to mark it and we used to say it is less accurate. ठीक है, ये सारी बातें इसी टॉपिक का पार्ट थी। आपको एक ग्राफ का ट्रेंड ड्रॉ करना आना चाहिए और ट्रेंड ड्रॉ करके यू कैन इजिली। सही है, आगे चलें। Let's move forward towards the next part of this. I hope कि explanation cover है। Across the period, you can write down the trend. Across the period, the atomic radius, and they do ask you to draw this graph. ये ग्राफ भी आपसे बनवाया जाएगा, ठीक है? So आपको इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। Next one and next property is basically called the ionic radius. Second one is ionic रेडियस। एक दो चीजें कवर होंगी आयनिक रेडियस में। आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चन इन बॉन्डिंग वाली वर्कशीट में जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। पहले मुझे कुछ चीजों के बारे में आंसर कीजिए। इफ यू हैव केस वन, चलो हम ऐसे ही मार्क कर लेते हैं, ऐसे केस लिखेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। ओके ओके, देखिए एलिमेंट and I'm comparing the element with a proton number एक के डिफरेंस से, यानी प्रोटॉन नंबर 11, 12, 13, 14 इतना ही डिफरेंस होगा। ज्यादा प्रोटॉन नंबर का डिफरेंस होगा तो मेरी बात इनवैलिड हो जाएगी। सेम पीरियड के एलिमेंट, लेट्स सपोज यू हैव अ एलिमेंट विद अ चार्ज ऑफ प्लस एंड यू हैव नियरली द सेम प्रोटॉन नंबर, एक दो का फर्क है, विद अ चार्ज ऑफ नेगेटिव। व्हाट डू यू थिंक द रेडियस ऑफ अ पॉजिटिव आयन
is greater or the radius of a negative ion is larger? Why? Excellent, because in a negative ion you have more electron as compared to proton. So the force of attraction of the proton on these electron is less and the radius would be more. Less force of attraction, hai na? So can I mark them? This one, that one is going to be a larger, a negative ion is always larger than a positive ion, और उसका reason क्या है? More electrons and less protons. ठीक है जी, clear? Second part की तरफ जाते हैं. If you have a positive ion and another positive ion and another positive ion, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि from +1 to +3, which one is the largest among all these three ions? Either the +1 is larger, either the +2 is larger, or either the +3 is larger. जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, you have less electron, more proton, radius और कम होता जाएगा. तो can I say that among this one is the larger one and this one is a smaller one. So as the positive charge increases, the radius decreases. Third and the last part, y -1, y -2, y -3. Which one is the larger one? Obviously. And this one is a smaller. So can I say that as the negative charge increases, the radius, because you have more electron and less proton. Again, whenever they give you any positive, two positive ions, or if they ask you the comparison of the size of the ions, always talk in terms of more electron, less proton. ठीक है? यानी वो पूछ रहा है कि जनाब Cl और Cl नेगेटिव में से किसका रेडियस ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे Cl नेगेटिव का. Reason, because in Cl negative you have less proton and more electron. सोडियम और Na positive में which one is larger? तो आप बोलेंगे सोडियम. Because in Na positive you have more proton and less electron. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से हमेशा आंसर किया जाएगा. Now the point is that on moving from left to right, आपके पास you have few positive ions जैसे Mg2+, Al3+, and Si4+. Metals है ना, तो metals form a positive ion and then we have a negative ions as well. So आप मुझे बताइए कि अगर हम बात करें from sodium till silicon, from here till here, the radius, yes, excellent sir, radius decreases. और reason बताइए जनाब मुझे, why the radius decreases? More proton, less electron. Good. In a similar way, अब अगर हम बात करें सिलिकॉन के बाद कौन आता है? फॉस्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन. द चार्ज ऑफ फॉस्फोरस इज, चलो आसानी कर देता हूं, बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज नाइट्रोजन. गुड. 3- या -3, दिस इज 2- एंड दिस इज, सो फ्रॉम फॉस्फोरस टिल क्लोरीन द रेडियस शुड इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, रेडियस अगेन डिक्रीजेस, क्योंकि जितना ये वाला आपके पास लार्जेस्ट होगा, ठीक है, एंड दिस वन इज स्मॉलेस्ट. मार्क कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? तो ये दो बातें क्लियर हुई, यहां बात समझ आ रही है. अच्छा, अब तीसरी बात, व्हाट अबाउट द आयनिक रेडियस ऑफ आर्गन? है ना, बिकॉज आर्गन को हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज नोबल गैसेस डू नॉट मेक एनी आयन. वो तो कभी आयन बनाते ही नहीं है, तो ठीक, उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ आयनिक रेडियस फ्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस, ग्राफ यहां लिख रहे हैं आयनिक रेडियस. ठीक है, ओके.
सोडियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम सिलिकॉन, सॉरी एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से कम सिलिकॉन। ठीक है, तो दिस इज Na पॉजिटिव। यहां भी आपके पास होगा प्रोटॉन नंबर, या आप यहाँ, हाँ, प्रोटॉन नंबर ही लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव Mg2+, Al3+, Si4+। ठीक है, नाउ यहां से आगे जाते हैं हम, एंड देन यू हैव सिलिकॉन, फॉस्फोरस, silicon, and now this one is phosphorus 3 minus, sulfur 2 minus, chlorine 1 minus. So this is a trend of ionic radius. देखो ओवरऑल मैंने नेगेटिव आयन, सारे नेगेटिव आयन का रेडियस पॉजिटिव आयन से ज्यादा बनाया, देखिए ग्राफ को, है ना। एंड विद इन अ पॉजिटिव आयन, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द रेडियस डिक्रीजेस। विद इन अ नेगेटिव आयन, जब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है। दोनों डिक्रीजिंग ट्रेंड में ड्रॉ करना है, पॉजिटिव आयन से ज्यादा रेडियस दिखाना है नेगेटिव आयन का। यानी टेक्निकली आई शुड ड्रॉ दीज टू ट्रेंड ऑन टू डिफरेंट ग्राफ्स, है ना। नेगेटिव का ट्रेंड अलग है, पॉजिटिव का ट्रेंड अलग है, लेकिन अगर हमें एक ही ग्राफ पे शो करना है तो आप दोनों को डिक्रीजिंग दिखाएंगे, नेगेटिव को मोर रेडियस और पॉजिटिव को लेस रेडियस। ठीक है, आई होप कि देखो ग्राफ की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है ना, वे की नेवर ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये डैश लाइन से भी अटैच करना जरूरी नहीं है, ये सेपरेट ट्रेंड है, लेकिन अगर आप डैश लाइन से अटैच कर भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। की पॉइंट ये है कि Cl नेगेटिव जो आपने ड्रॉ किया, क्या आपके ग्राफ में इज इट स्टिल ग्रेटर देन Na पॉजिटिव, या कहीं गलती हो गई? ग्राफ में ये ना हो कि आप ड्रॉ करें तो इस तरह ड्रॉ करें कि Na पॉजिटिव ऊपर आ जाए और Cl नेगेटिव नीचे आ जाए, यानी इतना रीजनेबल डिस्टेंस इनके दरमियान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड इज द सेम थिंग। ठीक है, हाँ जनाब, स्टेटमेंट दीजिए आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड का, लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज, मैं स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिख रहा, वी हैव डन दिस वन देन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज होती है? इलेक्ट्रॉन सेम शेल में होते हैं, ऐसे ही ना, जिसकी वजह से क्या चीजें सेम होती हैं जनाब? शील्डिंग इफेक्ट आपके पास सेम होता है ना, न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज। अब समझने वाले समझ जाए मैंने क्या किया। एनसी का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एसई का मतलब शील्डिंग इफेक्ट। याद है ना, एक दफा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप समझ लीजिए। मैंने कहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as the electron is present in a same outermost shell, nuclear distance and the shielding effect remains nearly same, ठीक है, but the nuclear charge increases, due to which the ionization energy value increases। याद है ना ये बेटा? Okay, I'm just going to draw it here. Okay, ionization energy. What is the unit of ionization energy? Unit of ionization energy. Kilojoules per mole, because technically it is the enthalpy change of ionization energy, है ना। और यहां पर आपके पास होगा, you have a proton number। जनाब, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, याद है, एंड देन सिलिकॉन,
then you have phosphorus, phosphorus से कम, sulfur, and then you have chlorine, and then you have argon. So you know the trends: sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and the highest one is argon. Noble gases always have the larger ionization energy value. ठीक है? Now पहले मैं इनके प्रोटॉन नंबर भी आपको दे देता हूँ: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and then Cl2 क्यों लिख रहा हूँ मैं? Cl 17 and then 18. Now there's a very simple question, और क्वेश्चन ये है जनाब के why the ionization energy value of aluminum is less than magnesium? aluminum के राइट साइड रीजन। हाँ भाई, why the ionization energy value of aluminum is less than magnesium? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप क्या करोगे? क्विकली यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। विदाउट ड्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू वोंट बी एबल टू आंसर 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आगे रीजन सामने। The outermost electron of aluminum is present in a p3p subshell, which is easier to remove due to a larger nuclear distance. Good. सही है? So एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मैं पूछूं फॉस्फोरस एंड सल्फर? हाँ भाई, फॉस्फोरस एंड सल्फर नहीं, वहां पर दो रीजन होते हैं। The outermost subshell of phosphorus is half filled, which is more stable. One reason. दूसरा रीजन होता है कि the outermost electron of sulfur is a paired electron removed due to repulsion. ठीक है, तो मेक श्योर बेटा कि पुराने टॉपिक का रिवीजन अच्छा रहे। थोड़ा सा मुझे रिवीजन वीक लग रहा है। वी आर इन अ नीड ऑफ अ गुड मिड टर्म एग्जामिनेशन, है ना? जब भी तो रिवाइज होगा तो खैर वन बाय वन वी विल टेक दीज टेस्ट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। चलें जी, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ओके, देर हो गई। हाँ, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट गिव मी 5 मोर। मेल्टिंग पॉइंट इज, बताइए मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? आई वी जस्ट डिस्कस इट एंड देन विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। चलें 5 मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? व्हाट इज द फैक्टर ऑन व्हिच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिपेंड? लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा? किसी भी मेटल का किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए, इफ इफ आई आस्क यू दिस इज अ सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो यू हैव टू थिंक अबाउट द फोर्स कीपिंग दिस स्ट्रक्चर इन अ सॉलिड फॉर्म। आप उसे ब्रेक करेंगे, मेल्ट हो जाएगा। मेटल्स में, मेटल सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है? मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज द मेटालिक बॉन्डिंग। सो हमें देखना है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में ट्रेंड ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या है। एज द नंबर ऑफ डिलोकिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो सोडियम से सिलिकॉन तक आपके मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स में किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। वो डिपेंड करती है एमआर के ऊपर। तो एमआर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, एंड सो ऑन। सो विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।